Good morning, everyone. How are you all? Welcome back once again. Myself, Sijo. Today we are going to study lesson number 2, part of geography, globe, latitudes and longitudes. Today I am talking about globe, latitudes, etc. What is globe? Dear student, you have learned that the earth is spherical in shape. It is slightly flattened at the both poles and bugs at the equator. आपने अभी सीखा है कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है. एक भूमध्य पर ध्रुवों और उभार दोनों पर थोड़ा चपड़ा होता है. The earth is represented by a spherical model of called a globe. What is globe? A globe is a model of the earth. Globe is always mounted on a stand with its axis title, as you can see into the picture. Look at the picture. This is a model of the earth. On a globe, we can see only half of the earth at a time. We have to rotate the globe to see the other half. Nowadays, we can see many details on the globe. What is a globe? Globe is a model of the earth. A globe is a three-dimensional model of the earth. Okay. Type of globe. Type of globe means globes are of different sizes and types. There are large, small and inflatable, pocket and globes, etc. I give you some examples. Advantage of using the globe. Globe represent the correct shape the earth. North and south pole can exactly shown on it. Shortest distance between places can be easily found on it, and globe are used to determine the routes of the satellites. Next, disadvantages of the globe. Globe cannot be carried easily. Globe cannot be carried easily. Details of the places cannot be shown on the globe because of the limited space on it. A globe cannot be made for a part of the earth. It is difficult to carry it. एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए क्या है, कुछ भी difficult and to carry it. We cannot see completely in a single glance. We cannot see completely in a single glance. This is a globe. What is a globe? Globe is a model of the earth. Okay, next हम पढ़ेंगे latitudes. Latitudes. Latitudes means the angular distance of a place from the equator is measured from the center of the earth is known as latitude of a place. Some lines marked on the globe are parallel to each other as they are marked horizontally at an angular distance from the equator towards the poles. ग्लोब पर अंकित कुछ पंक्तियाँ एक दूसरे के समानांतर है क्योंकि वे क्षैतिज रूप से ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी पर चिह्नित है. Distance from the equator towards the poles. They are equidistant at the place A and hence parallel to each other. This line on the globe are called parallels of latitude. मतलब ग्लोब पर अंकित कुछ पंक्तियाँ एक दूसरे के समानांतर है क्योंकि वे क्षैतिज रूप से ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी पर चिह्नित है. वे सभी स्थानों पर समान है और एक दूसरे के समानांतर है. ग्लोब पर इन रेखाओं को अक्षांश के समानांतर कहते हैं. These lines on the globe are called parallels of latitude. Okay.
Next, the equator is known as great circle because it is largest latitude. भूमध्य रेखा एक महान वृत्त है, वृत्त के रूप में जाना जाता है. The equator is known as great circle because it is largest latitude. All the other latitudes are called small circle. Because ये सबसे बड़ा अक्षांश है. What it means latitude? अक्षांश. Okay. All the other latitudes are called small circle as they decrease in size which moving towards the poles. The North Pole and South Pole are indicated by points on the globe. अन्य सभी अक्षांशों को छोटे सर्किल कहा जाता है क्योंकि वे ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए आकार में कम हो जाता है. उत्तरी ध्रुव और साउथ ध्रुव को ग्लोब पर बिंदुओं से दर्शाया गया है. The North Pole and South Pole indicate points on the globe. नेक्स्ट पढ़ेंगे characteristics of latitudes. Latitudes are located from 0 degree to 90 degree in the northern hemisphere and the 0 degree to 90 degree in the southern hemisphere. अक्षांश की विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे. Latitudes located अक्षांश उत्तरी लोकेट पर उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक और साउथर्न गोलार्ध 0 डिग्री से 90 डिग्री तक स्थित है. अर्धगोल. ओके. what is means hemisphere? Hemisphere क्या? What is means hemisphere? You know students, you know the earth into two equal parts. The earth into the two equal parts. That equal parts is known. One side is northern hemisphere and second side is southern hemisphere. Okay. The earth into two equal parts. The northern hemisphere and the southern hemisphere. The portion which is which is north of the equator called northern hemisphere. The portion which is south of the equator is called southern hemisphere. मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को हम कहते हैं southern hemisphere. Okay. और भूमध्य रेखा के और नॉर्थ साइड में स्थित है भाग को हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ओके. हेमिस्फीयर मीन्स टू इक्वल earth into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Okay. Latitudes are equal in size. Latitudes are unequal in size. Important lines latitude as follows: Arctic Circle, Tropical Cancer, and Equator and Tropical Capricorn, and Antarctic Circle मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त रेखा. ओके. द आर्टिक सर्कल इज 60 डिग्री. आपको टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर देख सकते. आर्टिक सर्कल टॉप ऑफ द पेज 66.15 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब मकर रेखा. एंड इक्वेटर द मिडिल 0 डिग्री. एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. कर्क रेखा और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न मकर रेखा और 23.5 डिग्री साउथ. एंड अंटार्कटिक वृत्त सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. Okay. Antarctic Circle is 60 degree 1/2 south latitude. Latitude of Tropical Capricorn and southern hemisphere. Look at the picture. South pole and north pole. Top of the bed North Pole. It means south 90 degree north and south pole is 90 degree. So North Pole is 90 degree north and South Pole 90 degree south. Important lines of latitude. Okay. How many latitudes are there? There are
Arctic Circle, tropic Capricorn, Cancer, Equator, tropic and Antarctic Circle. Okay, 23 degree 5 degree north, Equator 0 degree, and tropic Capricorn 23.5 degrees south. Okay. It helps. This helps to find out the exact location of a place. We can either divide the Earth into different heat and so on. We can find out distance of a place from the equator. Okay, next हम पढ़ेंगे. Next हम पढ़ेंगे why are countries situated away from the equator cooler than the ones near it. मतलब भूमध्य रेखा से दूर स्थित देशों की तुलना में इसके पास क्यों स्थित है. मेन हीट जोन्स. हम आज थोड़ा हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब गर्मी क्षेत्र. ओके, ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. आपको जानते हैं अर्थ के सभी हिस्सों के सूरज से उतनी मात्रा में गर्मी नहीं मिलती है. ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन. द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट. ये वर्ड का मतलब क्या है? हॉट. टॉरिड जोन मीन्स हॉट. दिस रीजन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, हेंस इज नोन एज टॉरिड. इस क्षेत्र में अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन रूप के माना जाता है. ओके, दिस रीजन इज रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, हेंस इज नोन एज टॉरिड जोन. इस क्षेत्र में अधिकतम गर्मी पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं टॉरिड जोन. ओके, द सन्स राइज फॉल वर्टिकल here throughout the year. Temperature here remains high all through the year, and there is no actual winter season here. सूर्य मतलब सन की किरण वर्ष भर यहाँ लंबवत पड़ती है. ओके, सूर्य की किरण वर्ष भर यहाँ लंबवत पड़ती है. वर्ष के दौरान तापमान अधिक रहता है और यहाँ कोई वास्तविक सर्दी का मौसम नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया फॉल्स इन द टॉरिड जोन. ओके, दक्षिण भारत का अधिकांश भाग है टॉरिड जोन में आता है. ओके, as the sunrise fall vertically throughout the year, this zone is receives maximum heat. Okay, it is between the tropic of Cancer and it is between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn is known as the torrid zone. मतलब कई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को हम कहते हैं टॉरिड जोन के रूप में जाना जाता है. ओके, वन फैक्टर इज देयर, दिस इज एंड कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को हम कहते हैं टॉरिड जोन. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन. क्या पढ़ेंगे? टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण क्षेत्र. टेम्परेट तापमान. ओके, the regions lying between the tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and between the tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere are known as the temperate zone. मतलब the regions lying between the tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and between the tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. Okay, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच के क्षेत्रों को शीतोष्ण क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है. Hence, the sun is never overhead in the zone. मतलब इस क्षेत्र में सूरज की कभी भी ऊपरी नहीं होता है. ओके,
The sun is never overhead in the zone. It is neither very hot summer nor very cold winter. Weather changes frequently here. Okay, neither matlab you know that it is neither too hot nor too cold in the region in this zone. मतलब इस क्षेत्र में यह ना तो बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ठंडा भी नहीं है. ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा यह ना तो बहुत गर्मी और ना ही बहुत ठंडा है. So this region is moderate climate. The region is moderate climate. Next we are going to study the frigid zone. Frigid. Okay. This is the coldest zone of the earth. This is the coldest zone of the earth. The sun does not rise above the horizon in the frigid region. Hence, light and heat received in this region are very weak. This region lies between the Arctic Circle and North Pole of Northern Hemisphere, and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere. Textbook में देखो, Northern Frigid Zone in the Arctic Circle, Northern Temperate Zone, Tropic Cancer in the middle equator and torrid zone. Up to last Southern Temperature, Tropical Capricorn, Antarctic Circle is Southern Frigid. South Frigid Zone is South and North. Okay, top of the page, North Frigid Zone. Okay, this is the coldest zone of the Earth. मतलब ये अर्थ का सबसे बड़ा क्षेत्र है. मतलब the sun does not rise above the horizon frigid region. तब तो क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से ऊपरी नहीं उड़ता है. Hence light and heat received in this region are very weak. इसलिए इस क्षेत्र में प्राप्त प्रकाश और गर्मी बहुत कमजोर है. Okay. This region is between Arctic Circle and the North Pole and the Northern Hemisphere. Look at that textbook, the picture of heat zone of the Earth, north of the fridge. This is a सबसे बड़ा ठंड क्षेत्र है. Okay. Next, there are the coldest region in the Earth. In this zone, the sun never rises in the much above the horizon. Therefore, this is zone receives the least amount of heat. The sunrise falls slanting there, so this zone is known as a frigid zone. Okay, dear students, your first video is completed. Thank you.